Okay. Should I start? Yes, sir. Okay, let us see again. When you will solve the problems now, then so you have extended it. Okay, you have extended it in search of I13. Correct, because you were knowing the velocity of point B. Velocity of point B was here. Okay. Similarly, the velocity of point C is here, and you have extended this line. You have drawn a line perpendicular to the direction of VC in search of I13. So when where these two lines will meet? How to draw? How to extend line B? एक मिनट I13. Correct. So what is important here? See, पहले तो आपने ये नंबर दे दिए 1, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे दिया है 4. ठीक है. Erosion forest is found in Brazil as it rains throughout. Your voice is not clear, Joy. Okay. You understood that how you found the direction of velocity of point B? Yes, sir. It is quite clear. Okay. अभी what is advantage here कि point B लिंक 2 पर भी है, ठीक है, लिंक 2 पर भी है और लिंक 3 पर भी है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो फिक्स है, that it is moving in this direction. Okay. So if we consider point B to be on link 3, okay, so corresponding जो ICR रहेगा, सेंटर ऑफ रोटेशन रहेगा, वो I13 रहेगा, क्योंकि हमने B को किस पे कंसिडर किया है, लिंक 3 पे. ओके, सो I13 और B के जो बीच का डिस्टेंस है, दैट विल बी द रेडियस. I13 और B के जो बीच का जो डिस्टेंस है I13B, and to that radius this velocity of B will be perpendicular. Okay, because we know that when a circular motion is happening, at that time the tangential velocity V is perpendicular to radius, right? So what we did, we extended, this is the direction, so perpendicular to that we extended this line in this direction. Okay, initially if you don't know that I13 I will get here or on the downward side, you can also extend on downward side here also. Okay, but from the experience I am knowing that it will come on the upside. Okay, similarly next, अभी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी का डायरेक्शन फाइंड आउट किया. कैसे फाइंड आउट किया? वी कंसीडर दैट पॉइंट सी जो है वो लिंक सी डी पर है. पहले हमने ये कंसीडर किया, लिंक पॉइंट सी तो दोनों पर है,
लिंक 3 पे भी है और लिंक 4 पे भी है। तो फर्स्ट हमने क्या कंसिडर किया, दैट पॉइंट सी इज ऑन लिंक 4. Okay, so if point C is on link 4, what will be the center of rotation for link 4? That is this point D, which is we have labeled as I14. Okay, so for point C, this is the center. If we are assuming that point C is on link 4, okay, so radius क्या होगा? Radius will be I14 से C point का distance. It is your radius. Okay, and your velocity of point C will be perpendicular to this radius, means perpendicular to this line. तो ये हमें उसका डायरेक्शन मिल गया, perpendicular to this line. Got it? नेक्स्ट, इसको ये डायरेक्शन में क्यों एक्सटेंड किया? अभी जैसे हमने पॉइंट सी को अज्यूम किया था कि लिंक 4 पे, अभी हमने क्या अज्यूम किया है कि पॉइंट सी लिंक 3 पे, क्योंकि हमारा अजम्पशन जो है वो वैलिड है. Our assumption is valid because point C is the common point of link 3 and link 4. Okay, so if point C is considered to be on link 3, then उसका radius क्या होगा point C का? That is that its distance from the point I13. I13 मुझे पता नहीं है. I don't know I13 yet. Okay, but radius will be I13C, and this radius will be perpendicular to again this velocity Vc. Means it says that in order to find point I13, I have to move in perpendicular direction to the direction of velocity of point C. Like this, I have to go like that, this way. So this is also the line which is in search of I13. This is also the line which is in search of I13. So where these two lines will intersect, that point will be mine I13 here. Are you understanding? Yes, sir. So which So two how facts? do we have to extend this line to infinity, or do we Which need to two? measure it? Yes, I So do we cannot. need to measure the line and extend, or can we extend to infinity? You have to like extend it in a direction where you expect other line to come. Okay, for example, see, it is link 3. ठीक है, लिंक 3 पे जो पॉइंट बी है उसका डायरेक्शन हमें पता है वेलोसिटी का. लिंक 3 पे पॉइंट जो सी है उसका भी डायरेक्शन हमें पता है. ओके, नेक्स्ट, अभी अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगा, इन से फ्रॉम पॉइंट सी आई विल एक्सटेंड इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड फ्रॉम पॉइंट बी आई विल एक्सटेंड इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दे विल नेवर मीट. ओके, they will never meet. So I have to extend them in upward direction where these two lines will meet, and I can guess this direction whether to extend upward or downward based on the velocity direction. ये velocity का direction मुझे already पता है, तो किस दो लाइन में किस डायरेक्शन में दोनों intersect होंगे is important for us. Okay, so which two facts we used? First fact is that velocity is perpendicular to radius. ये पहला फैक्ट है. ठीक है. सेकंड, a point at the joint is a point of two links, is the point of both the links. जैसे पॉइंट बी जो है वो लिंक ए बी का भी पॉइंट है और पॉइंट बी सी का भी पॉइंट है.
ये दूसरा फैक्ट यूज किया हमने। थर्ड फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ICR 1 लिंक 1 से रिलेटेड होते हैं, जैसे I12, I13, I14, ये ICR ही कैलकुलेशंस में लगते हैं, दूसरे ICR नहीं लगते। जो मेथड हम यूज करेंगे उसमें यही ICR लगेंगे। We will not make use of other ICRs. Okay. So see, you have located here I12. You also have the I13. I12, we say that it is the ICR of link 2. I13, we say it is the ICR of link 3. And ICR14, we say it is the ICR of link 4. Okay. Now, for every link, you know the ICRs. No need to find out for the ICR for the link 1. It is the fixed one. It is not turning, it is not having any motion. So if you know all these ICRs which are related to link 1, you can do the calculation part. As far as calculation is concerned, you can do that. Okay. So हमें क्या पूछा है, draw in example what is asked to find out the angular velocity of link BC, right? In the problem. Yes, sir. Okay. So हमें find out करना है ओमेगा, ठीक है? What we know the formula V equal to R omega. V equal to, ठीक है, R omega. So omega BC, right? Omega BC is nothing but BC is your link 3, right? Link 3. Omega 3 हमें find out करना है. So suppose for that what you will need, you need the velocity and radius of any one point which is on link 3. Omega 3 कैसे find out होगा? Omega 3 can be found, omega 3 is equal to velocity, okay, velocity upon radius. So velocity कौन सा velocity? किसी एक पॉइंट का जो लिंक 3 पर है उसका वेलोसिटी लगेगा आपको, ठीक है? लिंक 3 पे कौन सा पॉइंट है, देखो लिंक 3 पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी है या फिर पॉइंट सी है, ठीक है? तो मुझे जो दिया है वो लिंक 2 का एंगुलर वेलोसिटी है, तो उससे मैं पॉइंट बी का वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाऊंगा। लिंक 4 का कुछ भी डेटा मेरे पास नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, मैं कंसीडर करूंगा कि पॉइंट बी लिंक 3 पर है बिकॉज इट इज अ कॉमन पॉइंट। ओके, सो टू कैलकुलेट ओमेगा 3 I will write down the equation velocity, okay, velocity of point B upon, okay, what is the radius of point B if we are considering it to be on link 3? अगर point B को link 3 पे कंसिडर किया तो उसका रेडियस क्या होगा? point B का डिस्टेंस from the ICR of link 3, ICR of link 3, ICR link 3 का ICR कौन सा है? I13, right? So I13 I will write down I13, और I13 से कौन से पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए मुझे? पॉइंट B का। तो ये तो आपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से बनाया है, तो आपको क्या करना होगा, इसको पहले मेजर करो कितने mm आता है, राइट? यू विल मेजर इट एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10, क्योंकि आपने स्केल फैक्टर लिया था 10, इसको आपने रिड्यूस करके बनाया है।
Okay, but here again this distance is known, but velocity of point B is not known, right? So we cannot solve this equation. Okay, so how to find out the velocity of point B? So again we will use this formula V equal to R ओमेगा. ठीक है, कैसे? अभी पॉइंट बी को हमने पहले लिंक 3 पे कंसिडर किया था. अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट बी को लिंक 2 पे कंसिडर करेंगे, राइट? क्योंकि वो पॉइंट बी जो है लिंक 2 का भी पॉइंट है. It is valid to assume point B on link 2. Okay, so if we assume that point B is on link 2, तो formula क्या बनेगा? VB equal to V is equal to R omega. What is radius? Radius is nothing but distance between point B and the ICR of link 2. क्योंकि point B को हम कहाँ assume कर रहे हैं? link 2 पे. link 2 का ICR कौन सा है? I12. ठीक है, सो रेडियस विल बी I12 से पॉइंट बी का डिस्टेंस, I12 से पॉइंट बी का डिस्टेंस. ओके, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय ओमेगा. ओमेगा विच ओमेगा? अभी बी पॉइंट लिंक 2 पे कंसिडर किया है, तो लिंक 2 का ही एंगुलर वेलोसिटी लेना है. I12 B into omega 2. Omega 2 is nothing but angular velocity of link AB, which is this. ये दिया है आपको 10.47 आपने फाइंड आउट किया है. एंड व्हाट इज I12B? I12B is this distance. सो ये 30 mm हुआ है और आपने उसमें स्केल लिया है K का 10 का, तो 30 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 300 हो जाएगा. I12B will be 300 into this 10.47. So whatever will be the answer, that will come in mm per second, velocity of B. And once you find that, you put that value of velocity of point B here in this equation to find out the angular velocity of link 3. Getting this calculation? Yes, sir. Okay. So it is very important. Only one formula, you know, only one formula. What is that? V equal to R omega. That's it. Okay. एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो हम पूरी लिंक के लिए निकालते हैं, क्योंकि लिंक में जितने भी पॉइंट्स हैं सेम एंगुलर वेलोसिटी से टर्न होते हैं. ओके, एंड जो लीनियर वेलोसिटी है वो द लीनियर वेलोसिटी of different points on the link will be different. For example, this link 3 में लिंक 3 पे पॉइंट बी भी है, पॉइंट सी भी है, लेकिन दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा. नॉट ओनली डायरेक्शन, इवन मैग्नीट्यूड आल्सो. ओके, लेकिन लिंक 3 का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहेगा सब पॉइंट्स के लिए. सब पॉइंट्स एक ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होंगे. They will make same 360 degree together. Okay, but their linear velocity will be different. So this is the concept. Okay, so हमने यहाँ पे हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC फाइंड आउट करना था. लिंक BC था, लिंक 3 था. So to find out that, we needed the velocity of any one point on that link upon the radius of that point. Okay, then this way we calculated all this. We also located the ICRs. In this way you will do the calculations. Okay, now I will again explain you the location of all the ICRs. In the problem it is mentioned that you have to locate all the ICRs. So see what we have done.
I12, I14 we know. Here I13 is there. Here I34 is there. ठीक है, I34. Then here I23 is there at point B. Right. Now, how many ICRs are there in this mechanism? Number of links are 4. Number of links are 4. Okay. So number of ICRs will be 6. So out of 6, 5 are known. 1 is unknown. Okay, which is that one unknown? So if you see the combinations of one link with every other link. So 1, 2, 1, 3, 1, 4. ये तीन ICR है. फिर और कौन से कॉम्बिनेशंस बचे हैं? That is your 2, 3 and 2, 4. ये एक कॉम्बिनेशन है. And lastly your 3, 4. These 6 ICRs are there. Out of that, what we know? We know I12, I13 we just located. I14 we know. I23 here we know. I24 is unknown. ये हमें find out करना है. और I34. So how to find out I24? Okay, so you know the Kennedy's theorem. Okay, what it says, that you consider 3 links, any 3 links, and the ICRs of all these 3 links will lie on a straight line. All 3 ICRs will lie on a straight line. So if we want to locate ICR 2, 4, so it is quite sure that out of those 3 links, 2 links are 2 and 4. 2 and 4. We can select any other link. Okay. So for example, 2, 4 is here. So in those 3 links, say 2, 4. So which one to select? What is remaining? You can select 3 और 1. 2 ही लिंक बचा ना अभी. देखो 2 और 4 तो कॉमन है. अभी कौन कौन सा बचा है? लिंक 1 और लिंक 3. सपोज इसमें से हम लेते हैं लिंक 1. ओके, तो यहाँ पे लिंक जो बन रही है वो 2, 4, 1. तो जो ICRs है ये तीनों लिंक के वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे. Which 3 ICRs are possible? 1, 2, 1, 4, 1, 4 and 2, 4. See, 1, 1, 2 here, 1, 4 here. So जो 2, 4 रहेगा, that 2, 4 will be on the line which is joining these two, and it may be on either side. It may be on either side. Here it may be here, or it may be here also. We have extended this line. Okay. Next, first we consider link 3 with 2, 4. Okay. Now we will consider this combination 2, 4, 3. 2, 4, 3. So which 3 ICRs are possible from this combination 2, 4, 2, 3 and 3, 4. Okay. So 2, 4 तो हमें पता करना है. Next is 2, 3 and 3, 4. So it is 2, 3 is here and 3, 4 is here. So 2, 4 will be lying on the line which is joining these 2 points.
Okay, so if I join this point and if I extend, and this line already we drawn in search of 2 4. Here also this is the line on which the point 2 4 will come. So whatever you will get here, that will be your ICR 2 4. Got this? I used the Kennedy theorem to locate the ICR 2 4. I will show you what is that theorem. See, this is that theorem. If three bodies move relatively to each other, they have three ICRs and they lie on a straight line. Okay, so in a mechanism, every link has relative motion with every other link. So we can select a combination of any three links. Here, as we have to locate the ICR 2 4, so in combination 2 and 4 is common. Okay. Can you solve this numerical and show me next time? Yes, sir. Yes, sir. Okay, try to solve this. It's simple. Okay, and a matter of practice. Initially, you will feel a bit difficult, but with practice, you will improve. Okay, then calculations. I will just show you the answers. Omega BC का आंसर क्या है? You note down this. Angular velocity of link BC comes as 6.28 radian per second. 6.28 radian per second. Okay, try to solve it next time. We will solve other example. There also you will get a clear idea. Okay, your concept will become clear. And if need be, then we can also arrange an extra practical. Any doubt, anything which you want me to, repeat? For example, see, this is the third step to locate ICRs for all the links. So for that, first determine the direction of velocities of the points, see, velocities of the points which lie on links that are connected to the fixed link. So फिक्स्ड लिंक को कौन सी लिंक कनेक्ट है, ये देखो ए बी कनेक्ट है और सी डी. इस लिंक पे जो पॉइंट्स है उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. तो पॉइंट सी और पॉइंट बी का वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन रहेगा. नो डाउट दिस डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लिंक ए बी. लिंक ए बी को परपेंडिकुलर रहेगा. Okay, so can we stop here? Anything you want to ask, Yes, please sir. ask. Yes.
Anything you want to ask? Yes or no? No, sir. Okay. So let us stop here. See you next time. Thank you. So,